Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about reduction formula. This is the topic of BSc first semester जो student है उसका topic है जो calculus है ना उसी का topic है. Calculus BSc first semester student के एक core subject है जो mathematics department का है उसी का एक core subject है और उसका जो टॉपिक यूनिट नंबर 2 मैंने सिलेबस जो है ना सिलेबस को पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम कर दिया है. तो पहला जो टॉपिक है ना यूनिट नंबर 2 ये जो है ना यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है. यूनिट नंबर दिस इज यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 में बाद में यूनिट नंबर 1 के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले यूनिट नंबर 2 है पढ़ लेते हैं. तो यूनिट नंबर 2 में जो है ना इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना होगा. देखिए जो इसे कहते हैं जिस फॉर्मूला के ये एक फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश करेगा. इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है उसे क्या कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला. रिडक्शन फॉर्मूला दैट मीन्स इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग. That is the formula. So let's find out the formula. We are going to find the reduction formula for integration sine to the power nx dx where n belongs to z plus. That means n is a positive number. N is a positive integer but greater than 1. It is how key. Now what is the matter? We know what we know. We have find the integration sin x dx. This is equal to what? Minus cos x. Integration sin x dx equal minus cos x plus c. We know this. Okay. And integration sin square x dx ये कैसे निकालते हैं ये भी हम कैसे निकालते हैं ये भी हम जानते हैं. इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x बट व्हेन n इज ए वेरी लार्ज नंबर हाउ कैन यू फाइंड इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx when n is equal to 16 n is equal to 15 how you can find then. So we have to find out a formula for like this number, very big number. We cannot integrate like this process. We cannot integrate. We have to find a formula that is called reduction formula. Let's find a formula now. Okay. So now let's see here. Let I is equal to integration sine to the power nx dx. Okay, let I is equal to this, and this is equal to what we know. We know this is equal to integration. Let's see here, sine to the power n minus 1x sine x dx. This is the formula. Okay, sine to the power integration sine to the power n minus 1x sine x dx. This is the formula. This is not the formula, but we can write this like that, like this, because multiplication of this we will get sine to the power nx dx. So now look into here. This is equal to what we can write. This is equal to. Now we know integration u v dx. That means integration f of x g of x dx. This is f of x, this is f of x, this is g of x, this is dx. What we get integration f of x g of x dx. This is equal to what is the formula for this? We know this is equal to u integration v is equal to g of x u f of x integration g of x dx integration ddx of f of x integration g of x dx whole dx.
So this is the formula. This is the formula. This is the expansion. This is the expansion. We will expand this like this formula. Okay. So we know this. Okay. Now let expand it. But what is f of x? What is g of x? For that formula, this is I let. That means inverse trigonometric function. This is logarithmic. This is algebraic. This is trigonometric. This is exponential. This is a trigonometric function. This is t and this is I. What is come first? That is I. Okay. I let according to I let formula. But we can say. Okay. So f of x, this is f of x, that means sine to the power n minus 1x integration g of x means integration sine x dx minus integration ddx of f of x ddx of sine to the power n minus 1x, that means ddx of sine to the power n minus 1x f of x integration g of x means integration sine x dx and whole dx. Is it? Yes. Okay. Now this is equal to sine to the power n minus 1x integration sine x dx. This is equal to sine to the power n minus 1x integration sine x क्या हो रहा है minus cos x. Okay, this is equal to ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन. Okay, ddx of sine inverse sine to the power n minus 1x. This is equal to n minus 1 sine to the power n minus 2x n x to the power n minus 1x dx. And this is not x, sin x, but this is not x, this is sin x. So the integration sin x is equal to, इसको डिफरेंशिएट किया, so ddx of sin x is equal to cos x. That means ddx of sin to the power n minus 1x is equal to n minus 1 sin to the power n minus 2x ddx of sin x, because this is not x, this is sin x. So we have to differentiate this according to differentiation rule. So ddx of sin x is equal to cos x. Okay. Integration sin x dx. This is equal to. This is also minus cos x. This is minus cos x. And बाहर में ये वाला dx लगा दिया. Okay. Now this is equal to sine to the power minus sine to the power n minus 1x cos x minus integration ये n minus 1 को हमने बाहर ले लिया है. minus n minus 1 integration. This is sine to the power n minus 2x and this is equal to minus cos square x. This is equal to minus cos square x dx. अभी इस माइनस को यहाँ पे ले आइए. So this minus, so this is plus and cos square x dx. Now can you find the integration of sine to the power n minus 2x cos square x dx? This is f of x, this is g of x, or this is f of x, this is g of x. Like this formula you will expand it and this will be very a large number. Okay, so we do not expand this in the formula integration f of x g of x again. Now we will, हम अभी यहाँ पे ख्याल करते हैं, हम क्या करते हैं cos square x को हमने साइन की रेस्पेक्ट में बांट देते हैं. अभी देखिए
cos square x is equal to what? Cos square x can be written as 1 minus sin square x. Cos square x can be written as 1 minus sin square x. So this is 1 minus sin square x dx. Now this is equal to sin to the power nx dx. So integration sin to the power nx dx, this is equal to minus sin to the power n minus 1x cos x plus n minus 1 into integration sin to the power n minus 2x into 1. So sin to the power n minus 2x dx, and this is minus. So minus n minus 1 into integration sin to the power n minus 2x into sin square x. This is equal to sin to the power nx dx. यहाँ पे भी sin to the power nx dx है, यहाँ पे भी sin to the power nx dx. ये दोनों फ्रेंड्स है, सो इन दोनों को साथ में लाना होगा. सो इसको हमने यहाँ ले आइए, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? देखिए ये sin to the power nx dx जो पहले से यहाँ पे है, एंड इसको अगर हम ले आया प्लस n minus 1 plus n minus 1 integration sin to the power nx dx is equal to ये वाला quantity, this is equal. So sin to the power n minus 1 x cos x, यहाँ पे plus n minus 1 integration sin to the power n minus 2x dx. ये वाला क्वांटिटी तो यहाँ पे चला जाएगा, तो बस इतना ही है. अभी देखिए दिस इज sin to the power nx dx. sin to the power nx dx बट यहाँ पे इंटीग्रेशन था या इंटीग्रेशन था, हाँ इंटीग्रेशन sin to the power nx dx. ये भी इसको हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन sin to the power nx dx into this is equal to 1 and this is equal to n minus 1. Is it? Okay. ये कॉमन लो आते हुए ये हो गया, दिस इज ओके. सो दिस इज इक्वल टू माइनस sin to the power n minus 1 x, this is cos x plus n minus 1 integration sin to the power n minus 2 x dx. Now 1 प्लस माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पे क्या है? n है. इस वाला n को यहाँ पे सिर्फ n है, इस वाला n को हम यहाँ ले जाएगा. सो हमें फाइंड करना था इंटीग्रेशन sin to the power n x dx. यहाँ पे n वाला टर्म ज़्यादा है तो इसको हमने यहाँ ले जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस sin to the power n minus 1 x cos x divided by n plus n minus 1 जो यहाँ पे है, और यहाँ से ये वाला n तो यहाँ आया तो ये भी. सो दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n, दिस इज इंटीग्रेशन ओके, इंटीग्रेशन sin to the power n minus 2x dx. अभी देखिए इंटीग्रेशन sin to the power nx dx को हमने क्या लिखा था? दिस इज द फॉर्मूला. इफ यू विल, सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज फिनिश. You have find the formula for integration sin to the power nx dx is equal to this. This is the formula we have obtained. But we can do another thing. sin to the power nx dx इसको हमने मान लिया था in. सो इसको हमने in लिख देते हैं. तो इसको क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन तो नहीं है, तो sin to the power n minus 1x cos x डिवाइडेड बाई n. यहाँ पे तो इंटीग्रेशन साइन ही नहीं है, प्लस n minus 1 डिवाइडेड बाई n. दिस इज sin to the power n minus 2x dx.
इसको हम लिखते हैं in-2. So this is the formula. Okay. This is what we call reduction formula.